Hi everyone. So great to be back again with a new episode of Indian universities. How do you crack the topmost Indian universities? How do you understand there are a lot of hidden courses, amazing courses here which you don't know at times. Like how many of you have heard of CIC Delhi University, Cluster Innovation Center Delhi University? How many of you are even thinking of, BBA Digital Technologies from somebody like Mahindra University? Yeah. How many of you understand Triple IT Delhi, which is of course BTech, Computer Science, and Social Sciences, and so on and so forth. So there are amazing courses, amazing array of universities, colleges, which we'll be talking about. As I understand, my team has also been talking to a lot of schools in Gulf, and there are students today who are attending from Gulf region also. So we'll cover separately for them NRI entries, how do I get in? Maybe I'm an NRI or OCI, which is Overseas Citizen of India, and how do I do it? So today's coverage is talking about Indian universities admissions. You know, we as a career counseling firm, we do not only India but outside India also. Next, I'll just tell you a little bit about us. Yeah, just show me the next. I think more people are joining in, so I'm just waiting for 2 minutes, and I'm just showing you a couple of things. Next. So we are a specialist career counseling firm. We work with schools. We help schools run career resource centers. We are helping schools with aptitude testing and career counseling. Some schools, my career counselors go and they run the entire career counseling system there. So that is how we are placed. We have been around for last 23 years, and hopefully we'll be around for next 50 years also. That's how I feel. Okay, so great that a lot of you could join in. I've also got questions, so maybe quickly first, I'll just quickly take some questions. I'm sure it will satisfy people who have asked. Also, I have comments. So, okay, my comments is on, so I can take comments also. But after 5 minutes, I'm so some questions were submitted. I'm quickly answering those questions. Uh, a lot of students have taken science. Now they are some other subject they're interested in, so you can build up. You can use COT and you can give science and still go for other subjects. So it's not that you have to give that subject exam only. So when we cover COT, I'll cover that more in detail. Can humanities students get into computers? Yes, they can. Humanities student can go for BCA, Bachelor's in Computer Application, Symbiosis, Pune, Bharatiya Vidyapeeth, Pune, IP University. So a lot of universities have BCA without maths. You can go for BCA and then you can build up your career there. Any engineering options other than medicine for PCB option, PCB student, bioinformatics. Bioinformatics, hottest career option. You'll get good jobs, good this thing all around. Whether you want to stay in India, you will work with companies like Optum, TCS, and so on and so forth. A lot of corporates. Or if you want to go outside, then also it's fine. Want to know about top government universities for BTech with easy entrance exam as student with general category? Admission is not happening, and I want to get admission in a government university. So IITs, triple ITs. Triple IT is a very, very good institution, even better than some IITs. NITs. So these everyone knows. Beyond it, DTU. You know DTU? Check out NSUT. Lot of like Jadavpur University. Yeah. So each area would have a couple of universities you can look at. The best resource for this is Careers 360. Careers 360. Again, for people who have joined in right now, I'm covering your questions, whatever you have asked. Can I be an ethical hacker if I'm from commerce with IP? Yes, you can do BCA plus ethical hacking courses online from Coursera, Udacity, and so on. Is it good to pursue MBA after BTech, MTech? It depends on you. Maybe you're a tech person. When you are chota, then you don't think of it. But a lot of my batchmates are top engineers from IITs, triple ITs, and so on. Finance, fintech, consulting are topmost options in the world. Any computer software degree from IGNOU, is it valuable? From IGNOU, for a fresher, it would not be that valuable. If you're a person who is working somewhere, then yes, you can. Otherwise, it will not be valuable. What apart from engineering? Okay, for PCM people, you can look at the following. You maybe physics is not great for you, chemistry is a big mystery. Then look for maths. Maybe you love maths. Even if you're not good at maths, look for stats. Do stats honors, do business analytics. Do stats honors, do data analytics.
Do stats honors, master stats, government job if you want, CSO, consulting job if you want, McKinsey, Deloitte. Yeah. So, I mean, there are good options. I have taken PCM. I'm not happy. I've joined GE coaching. Say bye bye to GE coaching. Just focus on maths or stats. You'll build up a good career. Maybe you are good in maths. Go for eco honors. Go for BBE. Maybe you're good with people, good at managing things. Go for management courses. I'm Indore. Yeah. It's fine that you have taken science. How many people at I'm Indore have a background in science every year? Almost 40 to 45% people who are joining every year are people who have science background. How many people at Sukhdev College of Business Studies come with science background? About 50%. It doesn't matter. Yeah. So it's not कि science लिया तो engineering करनी है, मतलब PCM लिया तो engineering करनी है. Of course, you can look at environmental sciences also. You can look at food technology. Yeah. So any of these also. What is the procedure of being a commercial pilot? IGRUA, IGRUA, entrance exam and a test and interview. But some private places like Orient Flying Academy, you can directly join. Indigo has a very good program called Indigo CA program, and lot of, but they charge a lot of money, about 1 CR. IGRUA costs about 60 lakhs. Orient should be around 55, 60 lakhs again. So without funds, earlier some people used to give scholarship, but that is not there right now. Should I choose, like, what if you're confused between PCB and PCMB? I suggest choose one side. It'll be better for you because competitions of both are very, very difficult. So choose one side. It is better for bio students. PCB for bio students. Four top career options. Bioinformatics. आप लोगों ने नहीं सुना, I don't know, but bioinformatics is the top option. Yeah. So why? Because 4 or 5 years ka padhai hai, and I can take you to any place in the world. I can get you jobs in Germany, Sweden, US, Canada, whatever you say, Canada. Okay. So bioinformatics, second option. Computer-aided drugs design. After pharmacy, computer-aided drug design. Third option, health informatics. Fourth option, bio plus management. Yeah. So these are things which you can look at. My study showcase, it is not about IIMs or other institution. मतलब IIMs are IIMs, so इसलिए वो integrated चलता है. वैसे Nirma University has it. Some private universities have it, but don't go for integrated. Do separate. अगर IIMs हो जाए तो integrated अच्छा है. Otherwise, do a bachelor separate. Maybe go outside India or do something else. Veterinary sciences, you want to check out VCI. Just check VCI. Veterinary Council of India. You'll get all colleges, everything. Public colleges, private colleges offer economics and political science. Okay, DU has eco, and you can take policy side by side. You can take up small programs from Center for Civil Society and so on. Symbiosis has eco, Narsimhanji has eco, Ambedkar University. There is Gokhale Institute at Pune, 5 year eco. So these are pretty good places which offer eco and have good scope. What after statistics honors, you can do masters, you can do data analytics, business analytics, or of course MBA तो हम कर ही सकते हैं. Scope in investment banking, very very good. Scope in actuarial science, very good. How do I do? How do I become an actuary? After 12th, take up stats honors, or you can take BBA, anything else also, and you give the first exam, and then you. Okay, I just forgot the first. I just tell you, and then you give CT series, CA series, XS series, 15 papers. Yeah. ACET, AECT, ACET. ACET is the first exam. ACET. Please check actuariesindia.org. Actuariesindia.org. Noise by saying, are the online ID courses good? Yes, they are pretty good. Yeah. Noise boy. Oh, nice boy. This is. Sorry, there are no nice boys, only bad boys. It was in jest. Army, best college for psychology honors in Delhi. LSR. IP College for Women. Though sorry, problem Shalraz College in terms of head of institution. Kamala Nehru College. If you want co-ed, Keshav Mahavidyalaya. Okay, Ambedkar University. IIPR Bangalore. Christ Bangalore. Gautam Buddha University. IP University. और नो विदाउट मास्टर तो उतना मज़ा नहीं आएगा और मतलब पैसा थोड़ा कम आता है शुरू में साइकोलॉजी में टेक्स टाइम IPM is better or Shahid Sukhdev is better? IPM is better infrastructure wise, global connections, placement. IPM is much, much ahead.
or every year keeps on going more and more ahead. It keeps on winning the race. Good non-LLU university for 5-year integrated course in Delhi. IP University, main campus. WIPS, Gautam Buddha University. I think अभी तो यही है. Corporate law is good. Cyber law, environmental law. These are like international law also. Degrees from deemed university are they recognized? Yes. Deemed खाली एक word है. Private को पूरा university नहीं बोलते. Deemed university बोलते हैं. Somehow ऐसे बस बना हुआ है. So deemed is equivalent to a university. Don't worry about it. Can I pursue clinical psychology master abroad after clearing some tests and all, Sarah? Not directly. So British Psychological Association, you can just go on their website, your Australian Psychology this thing, and then you can find out. And I think I deserve more this thing. Yeah. So keep on pushing me up. Okay. You can just throw these the asides on one side. E-commerce from Symbiosis or Narsimanji Mumbai? Narsimanji Mumbai. Mumbai has more internship, more big companies, the top finance firms. Go for Mumbai. Ishika is saying, from which college you should pursue BC and ethical hacking course? I already told you, Symbiosis Pune, Bharatiya Vidyapeeth, IP University. कुछ जगह मैथ्स चाहिए होता है बट इन जगह मैथ्स नहीं चाहिए. Do we need profile in Indian colleges? Ashoka, Kriya, Ahmedabad University. Some universities do ask for it. Divyanshika, AI engineering basically it's like part of computer science. अलग से AI private colleges में ज़्यादा है. Yeah, if you look at IIT Hyderabad, they also kind of specialize in that. But if you do computer science, you can side by side keep on building up yourself for AI. Geography honors is there in DU, Jamia Millia Islamia, other state-run universities. After that, you can check out GIS, Geographical Information System. Sarah, if you start a business, check out Your Dost. Your Dost. Richa ने start किया है. So they provide counseling services and they have a complete automated system. ऐसा कुछ कर लो तो मजा आ जाएगा. Yeah. So check out that. You can check out. So if you combine psychology and entrepreneurship, psychology and something digital, like check out Socially Sold. उन्होंने Instagram कर करके इतना अच्छा build-up कर दिया है. Yeah. And Sarah, if you're good at social media, you should come and help me out also. I need to do like 10 times better in social media. Okay. What about a course? ये बहुत students पूछते हैं. What about a course which has travel and money? International trade is that course. International trade. What is international trade? Exports, imports. So IFT is the best institute. IFT has started a new BBA, which is like analytics bola hai, but IFT otherwise is the best for international trade. IFT, like masters, they do the best. Uh, we will be talking about. We're just showing you a presentation. ये तो मैंने initially I got a bunch of questions. My team printed all these questions. So I was just answering these questions. On the questions, you can see my writing also. Please appreciate my writing. Yeah, it is just like a doctor. Though we are Dr. Sony is waiting for some time. He just wants to push me out of the frame. Okay, चलो questions बाद में लेते हैं. Let me show you some parts of the presentation. फिर अभी Vikram is here. So Vikram leads domestic. So Vikram, you talk about these questions also. Next, I just want to talk about some of the things which they have. CUT अभी cover कर रहे थे. Wait, we are just going to cover. अभी तो start किया. We just started out. So as I was telling you, some people have joined late. So computational biology, computer-aided drug design, the first two are hot careers because biotech, genetic science, microbiology wala, ये सब will take 10 years. If you don't do a PhD in this, मजा नहीं आएगा. Are you understanding? Yeah. Medicine will take 10 years. Yeah. Pharmacy is pharmacy करो. Canada से US से computer-aided drug design करो. 6 years story, get a good 80,000, $1 lakh per annum job, out of which 5% is mine. Okay. Physiotherapy, if you do, apna kaam karna, it is good, otherwise not so good. Okay. So, yeah, Ridhima will cover CUET. Abhi Vikram sir is an expert. He'll be covering in detail. Hospital management is also decent. Agar apna startup karna hai, then agricultural science is also good if you want to do your own startup. Okay. Next. WIPS or Shivnadar for BTech? Shivnadar, obviously, Preeti. Shivnadar is run by HCL Group. They are a big software company. Okay. So Shivnadar is better.
PCM based career option, IoT, AI, ML. Some places you can do this directly, otherwise, it's a part of computer science in India. But yeah, if you're going outside India, you can get specialization in a lot of countries. I'll tell you a country you would not have heard of, Estonia. Check out Tallinn University. Vikram sir, if you can write TALLINN. Tallinn University, Estonia is the best for cybersecurity. Yeah. How much is the expense? You'll be shocked. 6 lakhs per annum. That's it. In India, a lot of university will charge you 6 lakhs per annum. Yeah. So, so yeah, you could explore and find out. If I'm at Tallinn, I can do exchange program. I can go to US, Canada, and you can still build up. Okay. Merchant Navy. Okay, Merchant Navy is another one. You are a tagda, stout person. You can be on ship for like 8 months, 9 months. Rest of the time you are on land, uh, and you take care of either engineering side. So you are taking care of ship's engines, technical stuff, maintenance, or you are taking care of navigation. Then you are an officer or general administration. So officer, or engineer. Uh, so you have IMU, which is a government institution, topmost institution, entries through JE. But merchant navy is also a good career. Plus, you will travel to different places. 10 साल करके you can set up your own thing. I know people who set up export business, some shipping related business, recruitment business for shipping, blah blah blah. Okay. Architecture again takes time. Initially, money is not there in architecture. Money is not there in architecture. Please understand. Sound design, sound audiography is one option, which is latest option. We can think of it. Yeah. There's no institute for CA. It is ICAI only. मतलब पढ़ाई करने के लिए coaching institutes are there, but otherwise ICAI you just do it. Yeah. Food tech is a hot option. Thanks to all of you. You have been eating so much of Maggie. You have been eating so much of packed stuff that food tech has become a big option. Yeah. So food tech, dairy tech, these are good options which you could look at. Environmental science is again upcoming. Do you know that Delhi government is thinking of seeding cloud with silver particles, nano silver particles, so that rainfall comes? Yeah, so that is how serious some governments are. Today also in the newspaper it was that the CM has asked for report on what is being done to tackle the pollution which will come in the months of November, December. Yeah, so things like those. So next, please. I think next is commerce. So, commerce with maths, business analytics, hot career. If you're a commerce student, you're not thinking business analytics, you are living in the past. You are only thinking BCom honors, CA, BCom honors, CA. That was there 60 years back. Come on, guys, wake up. You can take a BBA business analytics from Christ University, Mahindra University, Hyderabad. Yeah. Of course, IIMs also introduced business analytics as a part of their when you do IPM program. So it is there. Can I go for fintech directly? Yes, BBA fintech, Christ University. So what do I do in fintech? You come out with, you will work with companies like Paytm or Bitcoin or Google Pay. So everywhere it is now fintech, fintech, fintech. Okay. Eco is a great career provided you are good at maths. If you don't like 11, 12 maths, don't go for eco. Okay. Maths, stats, honors, I've already explained hot careers. Whether you do it after commerce or after science, it's a pretty good career. Okay, next is guys business economics like BBE. Colleges like DU has it, Lucknow University has it, couple of universities, not so many, but BBE is a mix of like how do you apply eco to the world of business. So it is more of applied eco which you can look at, applied eco. Okay, and then of course you have management like Sukhdev College. In Mumbai, you have various colleges offering BMS. In fact, Mumbai has more than 100 colleges. Yeah. So the good ones are Hinduja College, Birla College. Of course, Xavier's also is there. Yeah. So BMS is a hot course which you can look at. BMS BBA is kind of similar, only very little difference. So it's more of the university, which university you're getting. So DU, Sukhdev College is the topmost college. But then Keshav Mahavidyalaya, Deendayal Upadhyay also good. Next is finance. So that also we can look at. Next. So without maths, a lot of people have been asking. I got a lot of questions that, hey, I don't have maths. Don't worry about it. So you can digital marketing, BBA digital marketing from Jain University, Bangalore. It's a BWalk. What is BWalk? Vocational course. Law is amazing. You can look at law also. Yeah. So law is amazing as a career. Some places like I am Rohtak, you can do BBA law, 5 years.
I will guarantee a good placement. I will guarantee a placement of maybe anything from 70, 80,000 rupees to 1.5 lakh per month. Per month. Yeah. Law is amazing as a career if you do it from top institute. Top 10 should be your target. Okay. Start preparation. Of course, CACS banking can be looked at. Psychology, in case you're interested, you want to be a psycho. I take a lot of psychos, I mean, psychologists. Okay. Pol Science is a great option. Pol Science, after Pol Science, you can go for governance consulting. Join organization like Samagra Governance, Dalberg, GDI, and others. After Pol Science, you can go for Polstrat, where statistics is being used to predict election results. I'm sure you would have seen, on TV channels, you would have seen uh, exit polls and so on. Who does that? Companies like Polstrat, C Voter, IPAC. You can do political consulting. IPAC is into it. All this after Pol Science. IR is a good area to look at. After 12th, you can go for Ambedkar University. Ambedkar has IR. Yeah. They call it Global Studies, BA Global Studies. Or you can do any graduation like Pol Science or others and then go for Masters from JNU or same internationally also. Can I do filmmaking in India? Yes, from Whistling Woods or any good university, preferably Moscow, and then go for FTII Pune. Okay. Advertising, huge area, huge, big companies. So Narsimonji has BBA advertising and branding. Okay. Okay. Now I would let Vikram sir take over. And I think a lot of you are asking about CUET, you're asking about other stuff also. So we'll talk about these in detail. Next, please. Vikram sir, you take over. I will also come back. Guys, stay here. I will come back and join after some time. ये सब मैंने बात की except for sustainability. तो थोड़ा सा विक्रम सर भी बताएंगे. Uh, and we'll take questions. I'll come back and take questions. So give me 15-20 minutes. I'll just finish our counseling case and come back. Meanwhile, Vikram sir is here and he'll tell you. And you can be in touch with us. You are not sure. You have three options in mind. Your parents have some other options. You want somebody to help you out. We are that person. We can help you out. We do complete career counseling. Yeah. Whether you want to study in India, if you want to study abroad, like other countries, US, UK, we help you with applications. We help you with profile building. I've got a very, very strong team comprising of PhDs, IIT guys, management people who can help you with developing a complete profile. I have sent people to the topmost institutes with good scholarship. This year, Arushi Anand has joined University of Toronto with 100% scholarship. She is my student. Yeah. So we have all those things available. You can write down a number somewhere and you can be in touch. And yeah, I'll come back and take all your queries. But meanwhile, Vikram sir is there. Vikram sir is going to discuss some other things and CUET and whatever we had mentioned, and government colleges in India, some good private colleges also, some unique courses also. Vikram sir. Thank you, sir. And hello all. So, Ripu, can you play the next slide with the PPT? Meanwhile, my questions बीच में ले लूंगा. So let's talk about the career options for the creative students. Like those are looking for something creative programs. Starting from designing could be a fashion designing, bachelor of designs, something काफी hot coming है like product designing, fashion designing, graphic designing, VFX, gaming. ये आप इसमें स्पेशलाइजेशन ले सकते हो. और इसके पॉपुलर प्रोग्राम्स, पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स लाइक IIT Guwahati, Hyderabad, then Shishti Bangalore, NID, DTU, Jan Bangalore, then Shivnadar University ने भी इस साल बैचलर ऑफ डिजाइन का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है. That's you can check it out. Then fashion communications, more of a marketing type and branding, fashion management, product advertising, Narsimunji, Jan Bangalore, Symbiosis, Atlas Skill Tech, एंड फ्लेम. ये आपको कॉम्बिनेशन दे सकते हैं एडवर्टाइजिंग के. एंड इंटीरियर डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग काफी अच्छा चलेगा. डिजिटल मार्केटिंग आप दो तरह से अपनी लाइफ में रख सकते हैं. या तो आप टिपिकली बीबीए प्रोग्राम में जाइए या मार्केटिंग का एज ए स्पेशलाइजेशन पिक कर सकते हैं और साथ साथ अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग में पिक करिए. अदरवाइज दे आर वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट, दोस आर ऑफरिंग डिजिटल मार्केटिंग. लाइक सिम्बाइसिस का एक तरह का नया यूनिवर्सिटी उन्होंने डेवलप करा है अपना, Symbiosis Skill and Professional Universities, जो BBA डिजिटल मार्केटिंग एक प्रॉपर स्पेशलाइजेशन देते हैं. तो दैट्स यू कैन चेक इट आउट. अदरवाइज बेनेट यूनिवर्सिटी का BBA के अंदर आप एज अ स्पेशलाइजेशन पिक कर सकते हैं. UI UX डिजाइन जो बैचलर डिजाइन में आएगा. ट्रैवल एंड टूरिज्म,
गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है IITTM इन नोएडा, दैट्स यू कैन चेक इट आउट. बैचलर डिग्री इन ट्रैवल एंड टूरिज्म की आपको मिलती है BBA के साथ. दैट्स अ वेरी ग्रेट कॉम्बिनेशन. अवनी का क्वेश्चन है, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स फ्रॉम एनीवेयर अपार्ट फ्रॉम NIT यूजफुल इन इंडिया? यस, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग एक आपका क्रिएटिविटी, आपका पोर्टफोलियो आपको शोकेस करना पड़ता है. चाहे आप MIT पुणे से कर रहे हो, अनंत नेशनल से करो, शिवनादर से करो, DTU से करो, वेरेवर, मतलब आपको अपनी क्रिएटिविटी को एंगेज रखना है और शोकेस करना है कि आप क्या बेस्ट दिखा सकते हो पब्लिक को. ग्राफिक मोड में, क्रिएटिव मोड में, कलर्स, थीम्स क्या है, आपको इन चीजों से प्यार होना चाहिए, तो आप अपना पोर्टफोलियो वैसे भी डेवलप कर सकते हो. नेक्स्ट स्लाइड. रिबू, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या सो जिसको डिजाइनिंग प्रोग्राम में जाना है तो ये बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन का मॉड्यूल भी देख सकते हैं जो IIIT दिल्ली में ऑफर होता है. इसमें बहुत अच्छी ब्यूटी है, लाइक 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर PCM स्टूडेंट जो JEE मेंस के थ्रू आएंगे, एंड 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट जो UCET एग्जाम के थ्रू आ सकते हैं. तो UCET के थ्रू आपको नॉट ओनली IIT मिलेगा, इवन IIITs, DTU भी UCET का एग्जाम लेती है, मतलब एज एक्सेप्ट करेगी एडमिशंस के लिए. दैट्स यू कैन चेक. नेक्स्ट स्लाइड. दिशा, टीचिंग करियर्स इन BSc केमिस्ट्री ऑनर्स. यस, बट नॉट ओनली BSc, आफ्टर MSc एंड PhD. अगर आप कॉलेज लाइफ में जाना चाह रहे हो, अगर आप स्कूल लाइफ में जाना चाह रहे हो एज अ टीचर, सो देन B.Ed आपको परस्यू करना होगा. सो BCom ऑनर्स विदाउट मैथ्स कुछ यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर करती हैं, जैसे DU कर देगी, IP यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट एंड भारतीय विद्यापीठ पुणे वाला कैंपस जो आपको BCom ऑनर्स ऑफर कर सकते हैं. नेक्स्ट. BBA विदाउट मैथ्स, क्योंकि काफी सारे बच्चे कहते हैं कि मुझे मैथ्स से इतना फोटे नहीं है, मैथ्स में मैं मैथ्स परस्यू को नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मैनेजमेंट का विंडो अपने लिए ओपन रखना चाहता हूँ. सो IIMS के सभी कैंपसेस BBA आपको ऑफर कर सकते हैं विदाउट मैथ्स. मुंबई यूनिवर्सिटी, DTU, NSUT, IGDTU, सिम्बायोसिस, महिंद्रा, नारसी, शिवनादर, ये सभी ओपन है आपके लिए विदाउट मैथ्स. नेक्स्ट. ये कुछ न्यू एज यूनिवर्सिटीज हैं जो एक अलग पैटर्न पे अलग एक एक्सपोजर दे रही हैं, जैसे अशोका, क्रेया, फ्लेम, OP जिंदल, शिवनादर, अहमदाबाद, अजीम प्रेम जी, जो एक नॉट ओनली आपको एक एकेडमिक दे रही है, साथ में स्किल्स भी दे रही हैं. विक्रम, एक बारी मैं हाईलाइट कर देता हूँ. So Please. how to choose, guys? A lot of people are confused that how do I choose a university? And maybe, of course, some places the university might not choose you. Yeah. So, like Ashoka, everyone understands. Everyone knows Ashoka. Of course, in my mind, Kriya or Ahmedabad University, they are also as good. Yeah. So, first thing is think each university stands for something. For example, if some of you, if some of you are interested in law, so OP Jindal is a good university. If you're interested in public policy, I'll still prefer OP Jindal. Recently they have really built up for psychology. But if I'm interested in liberal arts, an amazing environment which is equal to a global environment, then I would consider Ashoka. Yeah. So Ashoka would attract the best and brightest from all over India and outside India also, more for liberal arts, where I can do various combinations. Listen to what I do, what I actually study in first year. I'll study things like first semester. I'll study one, there's a subject, grade books. Do you understand? So you'll be taking books, reading, analyzing. There's a subject, critical thinking. So you will be, if you get into details of this, basically a university like Ashoka, a liberal art university, tries to build up your mental faculties, tries to give you an exposure, expand your horizons so that you understand things more from a practical perspective. You're able to verbalize things better, you're able to write better, you're able to communicate better. And then, of course, through activities, you're able to manage things also. So that is what I'm talking about. Okay. So Slide is just blurred. one university I want to add, Tata Institute of Social Science, that's offer BA Sustainability and Analytics. That's a very great options right now. Ribu, can you just remove the slide and put it once again, because I'm able to see it. I can see this. What the? I think my specs is. Just check your specs, people. Manish and Anvi. I hope your specs are not blurred. Okay, just joking. We'll just put it. Ribu, you can remove the slide and then put it up again.
I hope my shakal is looking good. Okay. Plaksha is a very good university for science people. Yeah. Check out Plaksha University. It's there at Mohali, Chandigarh. Plaksha and Mahindra are very good for science people. Okay. Plaksha, Mahindra, Shivnadar. Mahindra University. The chancellor is Mr. Anand Mahindra. And they have really built up a very good university. I have been interacting with professors, the vice chancellor over there. I am definitely impressed. 28 years of experience the vice chancellor has of running universities, being in universities all over the world. So their BTech programs are new age. They have latest, and they. I remember I was going out. I was in Gulf doing workshop with a professor from Mahindra University. You know what research they are working on? He's a professor. He's a person with civil engineering background. So that time one bridge had crashed in Ahmedabad. So this professor is what they did was they're doing a project with government where across India any bridges they have put up motion sensors, and they have created an app. So any government official can just open up the app and they can see if there is more stress on any bridge. So there it'll come up and red light will start blinking. You understand what I'm talking about? Yeah. So that's the kind of projects they are doing. So Mahindra University, Plaksha, even Azim Premji and Shiv Nadar. Amazing for tech people. It's amazing for tech. Nice boy, but I'm sure you're a bad boy. Okay, next. Next, please. Yeah, so these new age universities typically you would have research as a part, which you'll be surprised, but maybe like 60% of DU would not be having it. Yeah, that strongly. As a new age university would be having it. Yeah. So critical thinking, leadership, decision making, these are skills which you learn better at these universities. Again, I'm not making a play. If you get into SRCC, LSR, we are happy. We know that you will build up a good career. But if you get into DU, so many other colleges, the bottom 50%, I have big question marks. If you get into Mumbai University, the bottom 50%, I have big question marks. Yeah, then I would prefer a New Age university. Next. Okay, these are some profiles we are sharing with you. So these are my students only because we help. So just to understand, even for Indian universities, you would need profile. So like this person did a research paper, and the paper was published. So this is the published link which is there. She founded an NGO Aesthetic. She was a volunteer with CRY. I helped him get internship with Ministry of Commerce. She went to Singapore, and this SHIP is a program in Singapore, so she participated in that. She was the chapter head. She was Economics Club president. Then Interact Club, I'm sure some of you would be. Yeah, Interact is the Bacha Club of Rotary. Then school leadership, like prefectorial board, she was a part of. Then she participated in GRIP program, which is done by NUS NTU at Singapore. And then she's an artist also, so her art portfolio was submitted. Yeah. So this is like how a typical profile looks to a person. Next, I'll just show you one more profile before we move on to universities. Any questions you have now, you can keep on asking in between. Yeah, this is another profile. So drivers training program. Can you imagine? Yeah, are training from a driver so that they can communicate better, be better, so that they can get better jobs. Summer school at Berkeley, it was a credit based summer school which was done for this student. Neha Savera NGO one participated in. Artist portfolio again. Internship transporters, internship this transporters to the one is a new startup. A lot of blogs were undertaken. A YouTube channel was made. She had learnt a language also. She's from DPS Dwarka, so she was a peer counselor at DPS Dwarka. Volunteer with an NGO at Agra, Ek Pehel. And then school activities, MUN member, and couple of online courses. Yeah. So this is how a decent profile looks like. I should be able to fill up at least 10 places on a profile. Next. Okay, some deadlines you should be aware of. So Ashoka will have rounds for applications. So deadline one is like 22nd November, second is 10th Jan. Yeah, so there are deadlines for applications which you need to understand. Already, I mean, things are out. Kriya last year it was 5th December, so Kriya will be next. Same with Flame. It is not Flames, it is Flame University. Plaksha was slightly later, 13 June.
Azmat, it depends. You know, like maybe you can use engineering for father's business also. So you can just share like what your father's business is in, and then we can talk more like how to go about it. Nice boy, bachelor psychology about the. You can send me your resume. I'll share with some people. Second is you can go online and check naukri.com. You'll get a lot of ideas. Next, we are covering universities in detail. So DU has Cluster Innovation Center. I talked about Cluster Innovation Center. There are two programs. One is BTech Maths and Innovation. It is for people who have maths. It's basically computer science, maths, and entrepreneurship. तीन areas हैं: computer science, maths, and entrepreneurship. It is very good. CIC was established by the earlier vice chancellor. That's a new center in Delhi University. Amazing teachers were pulled in. So BTech Maths and Innovation एक program है for people who have maths. It can be science, commerce, whatever. Second program is BA Social Science and Humanities. BA Social Science and Humanities has, BA Social Science and Humanities has, I can take up psychology. So, like first semester, last semester are fixed. In between, I can shift from one college to another. I can shift from courses also. It's like a foreign university thing. It's like liberal education only. So I can do psychology one semester. I can go to Sukhdev College, do management one semester. I can do sociology in some other college, or I can do psychology for 3 semesters. It depends on me. So that is how BA Social Sciences and Humanities is. Just check it out. Next, criteria to apply into CIC, you need 60% criteria. CUET is required. Courses for banking sector, Manish Rohila, any graduation, then you can go in for Banking Services Recruitment Board exams, BRSB. Alternatively, there are some institute like ICICI has a tie-up with one institute, Manipal Academy of Higher Education. So they have specific courses for banking. You can also check National Institute of Finance. A lot of banks also, also you can subscribe. Yeah, my team is messaging. Uh, just subscribe to our channel, so then you can be in touch. We come out with amazing YouTube videos, which you can look at. Next, how do I send you my profile? Yeah, you can. Vikram sir, you can share some number which where nice boy can send the profile. Okay, you can send it on this also. Father's business in crude oil and chemical export and import. Maybe Azmat, if your father is ready to adopt me, I can come and run the business and just be on a hammock. I'll put managers, senior managers. That's it. Anyway, that's more on the. So it depends, Azmat, like what you want to do. I suggest education is important. First, you should go for education. Maybe courses in entrepreneurship. Then, if you can join father's business also, or you can run your own thing also. Okay. Now, CUET again, Vikram sir will share and discuss about CUET. Vikram sir. थैंक यू सर. सो पहला थंब रूल सीयूईटी में आपको 3 प्रोसेस के लिए हम ऑलवेज रेडी रहना है कि पहला सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको टाइमली उसको फिनिश करना है और उसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, फोटोग्राफ डालनी है, 10th क्लास की मार्कशीट डालनी है एंड आधार कार्ड है. और उसके बाद आपको इनिशियली आपको यूनिवर्सिटीज एज अ प्रेफरेंस लिस्ट में आपको अपडेट करनी होती है कि ये यूनिवर्सिटीज मैं बकेट में रखना चाह रहा हूँ ये कोर्सेज के हिसाब से. देन आपका सीयूईटी का मेन जो एग्जाम है वो एक अलग विंडो में आपको लिए डिवाइडेड है. लाइक जैसे आपको सेक्शन मतलब सेक्शन 1A आपको लैंग्वेज चूज करना होगा, इंग्लिश और कोई भी 13 लैंग्वेज में. और उसके बाद डोमेन में से आपको जैसे सपोज आप कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट हो और अपना विंडो मैनेजमेंट, इको, मैथ्स ऑनर्स, साइकोलॉजी, पॉल साइंस सभी के लिए ओपन रखना चाह रहे हो तो इंग्लिश के साथ मैथ्स जरूर लेना एंड साथ में इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज या अकाउंटेंसी एंड प्लस जर्नल टेस्ट. जर्नल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. काफी लास्ट ईयर जो कुछ मेरा स्टूडेंट्स आए थे उन्होंने जर्नल टेस्ट ऑफ नहीं करा, इसकी वजह से वो रूल्ड आउट हो गए डीटीयू में भी और आईपी यूनिवर्सिटी में भी और डीयू में भी, क्योंकि जर्नल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको पिक करना ही होगा. नेक्स्ट प्लीज. और 3 स्लॉट्स में एग्जाम्स होते हैं तो आप स्लॉट्स वाइज आप चूज कर सकते हो. यस, सो सेक्शन 2 डोमेन, सेक्शन 3 जर्नल टेस्ट. नेक्स्ट प्लीज. ये डोमेन है. डोमेन में
आप वही पिक करिएगा. दैट मीन्स वट एवर यू स्टडिंग राइट नाउ, वेदर यू आर PCM स्टूडेंट, PCB, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, with English you need to pick your domain subjects only. Do not pick any new subjects, because आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टडी भी करनी होगी. लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स आपके लिए ओपन है, जैसे पॉल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, वो कोई भी स्ट्रीम का बच्चा अप्लाई कर सकता है. दैट मीन्स ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए. तो आप कॉमर्स स्ट्रीम के बाद भी उस प्रोग्राम में शिफ्ट हो सकते हो. नेक्स्ट प्लीज. सो कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं. जिक्टिस का मैंने नाम लिया था, उसके 2 प्रोग्राम काफी अच्छे हैं. जैसे BA इन सोशल साइंस, वो एक लिबरल आर्ट बेस में आपको यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती है, जिसमें आप फिलोसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ये सभी का ऑप्शंस आप ले सकते हो. सेकंड है BSc इन सस्टेनेबिलिटी एंड एनालिटिक्स. थोड़ा मैथ्स का फाउंडेशन ज्यादा है. अदरवाइज द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जामिया, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, देवी अहिल्या इंदौर, BR Ambedkar in Delhi, and DU, obviously. Yes. Next, please. जो इस बारी DU ने लिया, वो नॉर्मलाइज स्कोर लिया. कुछ बच्चों का परसेंटाइल भी आया, परसेंटाइल काफी अच्छा था. जैसे कुछ स्टूडेंट्स के मेरे 99 परसेंटाइल भी आए, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर कम हो गया. तो DU आपको एडमिशन नॉर्मलाइज स्कोर पे देगा, और DTU, NSUT और IGDTU जो डेली बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, वो आपको परसेंटाइल पे देगा. रुचिका is CIC is a standalone college for students studying in other DU colleges. CIC की बात कर रहे हैं, CIS की बात कर रहे हैं. CIC is a cluster innovation center, जो एक लिबरल आर्ट बेस्ड आपको कॉलेजेस मतलब स्टडी देते हैं. नेक्स्ट स्लाइड रिव्यू. सो ये प्रोग्राम स्पेसिफिक है, जिसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था, नॉर्मलाइज स्कोर क्या है और डिफरेंशिएट क्या है. ऐसे ये एलिजिबिलिटी बेस्ड आपको बता रहे हैं कि हाँ, इस प्रोग्राम्स के लिए आप एलिजिबल हैं, इसके लिए नहीं है. सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ एक पॉल साइंस का, तो उसमें क्या कॉम्बिनेशन चाहिए आपको. लिस्ट ए से आपको लैंग्वेज चाहिए, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम B2. सो इस तरह से अगर आपके कॉम्बिनेशन ए स्टूडेंट है, जैसे हिंदी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड बायोलॉजी लिए, और दूसरे ने करा है कि इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी लिए, प्रोग्राम स्पेसिफिक 662 आउट ऑफ 800 में से आपका काउंट होगा, राइट. एंड इकोनॉमिक्स के लिए आपको मैथ्स चाहिए, दैट्स मैंडेट. बट अभी DU ने काफी चेंज करा है, तो स्टैंडर्ड मैथ्स के अलावा अप्लाइड मैथ्स भी ओके है. इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैट्स एंड कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के लिए भी. यस. नेक्स्ट प्लीज. ये डिफरेंट एलिजिबिलिटी है. जैसे BSc फिजिक्स ऑनर्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इज अ मैंडेट. बायोमेडिकल, स्पेनिश के लिए कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, उसके लिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. नेक्स्ट. यस, माय स्टडी शोकेस इज आउट ऑफ 800, बिकॉज इसमें जनरल टेस्ट इंक्लूड नहीं हो रहा है इन प्रोग्राम्स में. नॉर्मली BMS में आपका जनरल टेस्ट इंक्लूड होता है. ये कुछ प्रेफरेंस लिस्ट है, जो हम कहते हैं कि टॉप प्रोग्राम्स, टॉप कॉलेजेस हैं इन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के लिए. बीकॉम ऑनर्स के लिए SRCC, LSR, हंसराज, क्रोडिमल, ये टॉप बता रहे हैं 4 और 5. उसके अलावा लॉन्ग लिस्ट है, जो आपको प्रेफरेंस लिस्ट में सबमिट करनी होती है. प्रेफरेंस लिस्ट में जब आपका CUET का स्कोर आ जाता है, उसके बाद आपको प्रेफरेंस लिस्ट अपने स्कोर के हिसाब से सबमिट करनी होती है. दैट मीन्स आप टॉप 20 या टॉप 30 में कौन से कॉलेजेस रखना चाह रहे हो. अगर आपका स्कोर उसके हिसाब से रहता है, तो आपको वो फर्स्ट लिस्ट में मिल जाएगा, अदरवाइज सेकंड या थर्ड लिस्ट में मिलेगा. लुफी, अगर आप DU मतलब दिल्ली NCR के आसपास पढ़ना चाह रहे हो और मेन फोकस आपका CA है, तो बीकॉम ऑनर्स आप देख सकते हो. तो उसके लिए CUET मस्ट है. अभी CUET काफी एग्रेसिव है, जो नॉट ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और काफी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज उसको अडॉप्ट करती जा रही हैं. एंड प्रेरणा सेट स्कोर अशोका एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज दे हैव अ ओन टेस्ट. सो इनका प्रोसेस लाइक अशोका में पहले एप्लीकेशन सबमिट होती है, लॉट ऑफ एक्टिविटीज, कुछ ऐसे के ऊपर आपको लिखना होता है, आपकी परसेंटेज, आपका प्रोविजनल स्कोर, जो आप अगर 12th में हो तो प्रेडिक्टेड स्कोर जाएगा. देन उसके बेसिस पे आपका शॉर्टलिस्ट होकर आपको टेस्ट के लिए कॉल आएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड उसके बाद आपको कॉल आएगा इंटरव्यू, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा. नेक्स्ट. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज विभू. दिशा, कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए CUET स्कोर मैंडेट नहीं है.
लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस से बेटर मैं आपको कहूंगा कि अभी आईआईटी पटना ने नया प्रोग्राम लॉन्च करा है, बीबीए ब्लेंडेड मोड, लाइक कुछ टाइम के लिए आप उनके कैंपस में भी जाएंगे, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो अदर देन द कॉरेस्पॉन्डेंस। ऑनलाइन प्रोग्राम जैन के, आईआईटी पटना के, ये प्रोग्राम आप चेक करा जा सकते हैं। जैसे मैथ्स के लिए इंस्टीट्यूट हैं सेंट स्टीफन, हेंस्टाज, एलएसआर, हिंदू, करोड़ीमल, देन स्टैट्स के लिए अगेन। नेक्स्ट स्लाइड। बीए प्रोग्राम, पॉल साइंस की कुछ रेफरेंसेस हैं। रिबू, कैन यू स्किप दिस स्लाइड एंड नेक्स्ट टू? सेम साइकोलॉजी एंड जर्नलिज्म, बीएमएस शहीद सुखदेव, श्री गुरु गोविंद सिंह केशव विद्यालय, दीनदयाल, बीएफआईए शहीद सुखदेव अगेन, बहुत अच्छा कोर्स है बीएफआईए, जिसमें आपको एक फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ अपना एक, अगर आपका बेंट ऑफ माइंड है तो आप इसमें ऑप्ट कर सकते हो। जैसे आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट एंड इंश्योरेंस के बारे में मोर डिटेल में आप स्टडी करोगे। बीबीई बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये एक फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम है, जिसमें अगर आप कहते हो कि दैट्स आई वांट टू लर्न economics something 50-60% rest I want to learn about something related to management, so this is a beautiful program. Yes, next please. So ये कुछ रिसोर्सेज हैं सीयूईटी के लिए जो आप चेक कर सकते हो। अड्डा 24/7, जहां से आप मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हो बहुत रीजनेबल प्राइस से। अदरवाइज selfstudies.com पे आपको फ्री रिसोर्सेज हैं, मॉक टेस्ट आप ले सकते हो। अदरवाइज वोकैब बढ़ाने के लिए आप जो भी टेस्ट देना चाह रहे हो उसमें इंग्लिश का पार्ट आएगा, तो आप ये बुक ले सकते हो, वर्ल्ड पावर मेड इजी, ये काफी आपको बिल्डअप कर सकती है। दिशा डोमेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए तो आपको रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ जो स्टूडेंट्स गल्फ से और बाहर आउटसाइड से हमें वॉच कर रहे हैं, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जो एनआरआई हैं, सार्क कंट्री से आ रहे हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, ओसीआई होल्डर हैं, पीआईओ होल्डर हैं, तो ये स्पेशली उनके लिए। नेक्स्ट स्लाइड। सो डायरेक्ट एडमिशन फॉर स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए डासा का विंडो ओपन होता है। डासा का विंडो हर साल अपग्रेड होता है और उनकी अलग वेबसाइट होती है, जो वेबसाइट का लिंक हमने अपने मेंशन कर रखा है, तो इस हिसाब से आप जाके चेक कर सकते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। अभी फ्रेश रिक्वायरमेंट जो अपडेट अभी तक नहीं आया है, अदरवाइज आप डिटेल लास्ट वाली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट। ये कुछ और पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो डासा के अंडर में रहते हैं। एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, जो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट प्लीज। जेई मेंस, अगर आप स्टूडेंट जो फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली जेई एडवांस के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, जेई मेंस का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है उनको। बट दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट एंड फर्दर ऑन अभी थोड़ा सा वेट करना होगा जो फर्दर नोटिफिकेशन आएंगी। ताराचंद, आप प्रिपेयर कर सकते हो सीए एंड बीकॉम ऑनर्स के, मतलब बीकॉम ऑनर्स के साथ। सो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट रहेगा कि कॉलेज भी जाना है, उसके बाद आपको कोचिंग भी अप्लाई करनी है। नो शुभी, फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स अगर आप मुंबई या डीयू के लिए टारगेट करना चाह रहे हो, तो फॉरेन हो या एनआरआई हो, उसके लिए अलग पोर्टल होता है। आई एम गोइंग टू शो यू दैट, अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई। रितु सचदेवा जी, बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर लॉ इन इंडिया, सो NLU obviously, then Christ Bangalore, Narsee Monjee, Symbiosis, then OP Jindal, then गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। एंड मुंबई यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस हैं, पुणे में ILS पुणे है, दैट्स यू कैन चेक इट आउट। भारतीय विद्यापीठ पुणे, दैट्स आल्सो यू कैन चेक इट आउट। नेक्स्ट प्लीज। सो ये CUET का है। CUET में आपको कोई स्पेशल प्रेफरेंस तो नहीं है, दैट मींस यू नीड टू गिव द नीट एग्जाम्स, बट उसमें कोटा होता है। कोटा अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस यू कैन अप्लाई फॉर मैनेजमेंट और NRI कोटा, जो हर साल का प्रोसेस है। अकॉर्डिंगली कट ऑफ के हिसाब से कुछ कट ऑफ कम रहेगा,
तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर पाएंगे. नेक्स्ट, सारा आप साइकोलॉजी के लिए क्राइस्ट बैंगलोर, अम्बेडकर अगर आप देखना चाह रहे हो, SNDT मुंबई आप चेकआउट कर सकते हो कि साइकोलॉजी की अच्छी रहेगी. जस्टेज एक्चुअल साइंस के लिए बेटर देन द कॉलेजेस आई प्रेफर आप स्टैट्स ऑनर्स या मैथ्स ऑनर्स परस्यू करो और साथ में आप एक्चुअल साइंस बॉडी के लिए अपीयर हो जाओ, रजिस्टर करा लो. जैसे यूके बॉडी है, इंडिया बॉडी है, आप उसमें आप रजिस्टर कराओगे और उस हिसाब से एग्जाम्स होंगे. तो स्टैट्स ऑनर्स बेटर चॉइस रहेगी एक्चुअल साइंस की डोमेन में जाने के लिए. एंड ये DU का पर्टिकुलर पेज है जो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली एक्टिव होता है और इसमें कोई एग्जाम नहीं है. स्टूडेंट को गाइडलाइंस और कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करना होता है, उस हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशंस मिले जाते हैं. यस, नेक्स्ट प्लीज. नॉइस बॉयज, देखो ये बहुत एक अलग पैटर्न पे बीटेक IT इन मैथमेटिकल इनोवेशन जो शुरू हुआ है बीटेक का, CIC का काफी अच्छा प्रोग्राम है. इसकी प्लेसमेंट्स अच्छी हैं. अगर आप आसपास ही रहते हो तो आई प्रेफर कि आप कैंपस में जाके प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक करोगे, यू विल अमेज. देन बैक टू स्लाइड, IIM इंदौर जो BBA एंड MBA का प्रोवाइड करता है एडमिशंस. तो इसके लिए स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो इंटरनेशनल एप्लीकेंट है उसके लिए SAT स्कोर चाहिए मिनिमम 1300 आउट ऑफ 1600. तो ये आप उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा एंड कंपोजिट स्कोर के हिसाब से आपका एडमिशंस मिलेगा. नेक्स्ट प्लीज. यूसीट में भी आपको अप्लाई करना होगा. उसके लिए एडमिशंस जरूरी है और IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, गुवाहाटी एंड हैदराबाद एंड जबलपुर IITTM के नाम से होता है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट प्लीज. हर कॉलेज में कुछ सीट रिजर्व्स होंगी फॉरेन नेशनल्स के लिए. दैट्स यू कैन चेक इट आउट हाउ मेनी नंबर्स. तो अप्रोक्सीमेटली 5% to 10% सीट्स रिजर्व होती हैं. सपोज किसी कॉलेज में 120 टोटल सीट्स हैं तो उसमें 5%. जैसे निफ्ट का है, निफ्ट में 5 सीट्स रिजर्व्स हैं कुछ कैंपसेस के लिए और 3 सीट्स एक्स्ट्रा रिजर्व्स हैं कुछ अलग कैंपसेस के लिए. तो ये थोड़ा डिफरेंशिएट रहेगा कैंपसेस वाइज. नेक्स्ट प्लीज. जस्टेज आपको स्टैट्स ऑनर्स देख सकते हो आप एंड एक्चुअल साइंस ऑफ यूके एंड एक्चुअल साइंस ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन पेज होता है, वो आप चेक कर सकते हो. देन अगेन NLUs जो क्लैट के लिए स्पेशली, उसके लिए फॉरेन नेशनल के लिए अपेयर होने की जरूरत नहीं है. बट अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पेपर वर्क है, दैट्स यू नीड टू चेक थ्रू क्लैट प्लेटफॉर्म. वो ऑलरेडी आउट है, आप चेक कर सकते हो जाके. नेक्स्ट. सेम NLU बैंगलोर का भी अलग पैटर्न है. उसके लिए अलग NLU बैंगलोर अलग टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है. आप उसका पोर्टल अलग है एप्लीकेशंस का, दैट्स यू कैन चेक इट आउट. नेक्स्ट. सो कुछ जो हमारी न्यू एज यूनिवर्सिटीज हैं उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस अलग है. जैसे अशोका, फ्लेम, OP जिंदल, शिवनादर, अहमदाबाद, क्रिया, प्लाक्षा, तो इनके लिए प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल प्रोसेस से. जैसे वो एप्लीकेशन के साथ कुछ आपकी एक्टिविटीज मांगेंगे, प्रिडिक्शन स्कोर मांगा जाएगा, कुछ ऐसे राइट ऑफ ऐसे के फॉर्मेट में आपको कुछ अपनी क्रिएटिव राइटिंग शोकेस करनी होगी और स्पोर्ट्स के अचीवमेंट्स ये आपको मेंशन करना होगा. देन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू. ये थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है. नॉर्मली अदर यूनिवर्सिटीज में जैसे DU है, जैसे CUET का स्कोर है, NLUs हैं जो क्लैट लेती है, सिर्फ एग्जाम बेस्ड है, कोई इंटरव्यू नहीं है. इनमें थोड़ा प्रोसेस अलग है. नेक्स्ट. सो अगर आपको हेल्प चाहिए तो वी कैन हेल्प यू फॉर द एवरी मैनर. लाइक प्रोग्राम में कंफ्यूज हो तो देन वी कैन फाइनलाइज द प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम. अगर आप 10th क्लास में हो, लेकिन स्पेशली ये डोमेन ये वेबिनार हमारा 11th 12th के लिए, तो प्रोग्राम में फाइनल करा के कौन सी यूनिवर्सिटीज बेस्ट हैं, क्या पैटर्न है, किस तरह की आपको कोचिंग करनी है और किस तरह के रिसोर्सेज आपको नेक्स्ट 6 मंथ और 1 ईयर में आपको देखने हैं, जिससे थ्रू आपका एक विजन क्लियर हो पाए कि this program is for me and this is my future and this is my job profile, this is my company is all about.
So that's we can help you out in every manner. Next please. And जो इंटरेस्टेड हो प्लीज ये नंबर पे अपना स्टडी इंडिया लिख के एंड यस आप मेंशन कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली माय टीम विल कनेक्ट विद यू एंड विल गिव यू सम डिटेल्स मोर टू कनेक्ट विद अस फॉर द सेशंस. सो सिलेक्शन यूनिवर्सिटीज मेनली क्या रहती हैं, कोर्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर, कौन सा कोर्स आप करना चाह रहे हो, एलिजिबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स क्या है कि few universities, private universities having some cost involvement in a too much manner. Then scholarships क्या हैं, कैसे आप स्कॉलरशिप के लिए फाइट कर सकते हो, एंड कौन सी लोकेशंस आप प्रेफर करना चाह रहे हो, इस हिसाब से हम यूनिवर्सिटीज फाइनल कराते हैं. नेक्स्ट प्लीज. दिशा, यस टीचिंग का करियर अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग रन रहेगा. अगर आप टीचिंग में आगे जाना चाह रहे हो तो हर कंट्री का अलग एक पैटर्न और एक लाइसेंसिंग होता है. अगर आप कॉलेज में जाना चाह रहे हो, अगेन पीएचडी तक आपको परस्यू करना होगा. असिस्टेंस इन एडमिशंस रिक्वायरमेंट. सो जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस को कैसे फिल करना है, इंटरव्यू प्रिपरेशंस क्या है, एसेस क्या है, एलओआर कैसे मेंटेन रखनी है, एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो हर यूनिवर्सिटी का अलग पैटर्न है, वो कैसे आपको मेंटेन रखना है, दैट्स वी कैन हेल्प यू आउट. नेक्स्ट. डिपेंड कि आपके पास मल्टीपल ऑफर हैं, देन वी कैन चेक, गिव यू ऑप्शंस ऑफ रैंकिंग, स्कॉलरशिप्स, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, दैट ऑन डिपेंड बेसिस. लाइक हर स्टूडेंट का अलग पर्सपेक्टिव है यूनिवर्सिटी चूज करने का. नेक्स्ट प्लीज. Last and curious, अगर if you want to know something about psychology for the abroad, so you can check out this number, Olivia, कि आपसे बात कर सकते हो, समझ सकते हो और सेशन फिक्स कर सकते हो. एंड इफ यू से दैट्स मुझे न्यू एज यूनिवर्सिटीज भी रखनी है और इंडियन जो सिर्फ टेस्ट के बेसिस पे एडमिशंस देती हैं, अगर आप वहां बिल्डअप करना चाह रहे हो तो प्रोफाइल पे थोड़ा सा वर्क करना होगा. तो दैट्स वी कैन हेल्प यू आउट कि कैसे रिसर्च पेपर फाइल करा जाएगा, कैसे सोशल प्रोजेक्ट होगा, स्टार्टअप आइडियाज पे बात हो सकती है, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज पे बात हो सकती है, कुछ कॉम्पिटिशन्स को अटेंड करा जा सकता है, कुछ समर कैंप्स क्यों करा जाए जिससे आपको एक्सपोजर हो जाए. शुभी, ओवरऑल डीयू में फॉरेन नेशनल्स के लिए सीट रिजर्व्स होती हैं, ऐसे पर्टिकुलर कॉलेज वाइज नहीं. तो जो मैंने आपको लिंक दिया था लास्ट टाइम, दिखाया था स्लाइड पे, दैट्स यू कैन चेक इट आउट. नेक्स्ट प्लीज. ये हमारे कुछ एडमिट्स थे, अशोका, प्लाशका, फ्लेम, क्रिया एंड और भी यूनिवर्सिटीज में शिवनाथर, अजीम, प्रेम जी, जिसमें हमने स्टूडेंट्स को हैंड होल्डिंग दी थी starting from counseling till your final application submission. So me and my team only specialize with the Indian universities and the CUET. For the abroad, we already mentioned कि आप कहाँ mention कर सकते हो, कहाँ yes लिख के भेज सकते हो. जैसे ये नंबर पे 8826019131 आप स्टडी इंडिया yes करके लिख सकते हो, then we can give you connect. रिधिमा, ये किस पैटर्न पे आप बात कर रहे हो? दिल्ली ह्यूमैनिटीज में वो एम्स की बात कर रहे हो तो एमबीबीएस है. सो कमिंग बैक टू पीपीटी, लेट्स फिनिश द पीपीटी, देन वी कैन टेक अ क्वेश्चंस. सो ये हमारे एडमिट्स हैं कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी. नेक्स्ट. So this is my team, Mr. Jitin Chawla, me, Mr. Rakesh and Akshay. Next. So this is our services. So I'm open for the questions right now. Ridhima, for civil services examination, I prefer कि आप साइंस में जाना चाह रहे हो या आर्ट्स में जाना चाह रहे हो, और कोई भी स्ट्रीम है आपके पास, किस प्रोग्राम को पिक करना है, लेट्स डिस्कस इन द प्रॉपर सेशन एंड अकॉर्डिंगली वी कैन गिव यू हैंड होल्डिंग, लाइक कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेंगी या कौन सा प्रोग्राम. आप प्लीज हमें कनेक्ट करो, हम विल हैप्पी टू कनेक्ट एंड हेल्प यू आउट फॉर दिस डाउट. फार्मेसी के लिए अलग पैटर्न रहेगा. अगर आप मिक्स करना चाह रहे हो फार्मेसी विद मैनेजमेंट, सो आई प्रेफर नार्सिंग मुंजी, मुंबई. दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द प्रोग्राम ऑफ बी फार्मेसी प्लस
MBA. Then Jamia do have pharmacy. Then all the government universities do have a pharmacy. But again, कुछ universities test ले रही हैं, कुछ universities merit पे जा रही हैं. That's you need to check it out. Jastage, प्रोफाइल बिल्डिंग आप किस कॉलेज की बात कर रहे हो? दैट्स अकॉर्डिंगली आई कैन सजेस्ट टू यू. नहीं चाहिए, जैसे ISI कोलकाता है या फिर DU के कॉलेजेस हैं, वहाँ पर नहीं चाहिए, वहाँ पर खाली CUT चाहिए. So 12th class people, one main thing I wanted to highlight before all of you, it is not your 12th class marks, it is CUT scores which will matter. Of course, if there's a tie then it matters, but first of all, focus. First thing in your life should be CUT, 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 CUT. You should eat CUT, drink CUT, sleep CUT. CUT should be the top thing in your mind and not 12th board. Pura zamana, including teachers, schools, coaching, parents, everyone is like 12th marks, 12th marks, 12th marks. I would not be bothered about it. CUT. I had मेरा यहाँ पूरा मेरा ऑफिस पूरा flood आ गया था because one girl cried like crazy. She got 98%. Vikram, you remember that case? 98%, but CUT low score. She got a college DCAC. She hated the college. वो 2 घंटे में वापस आ गई कॉलेज से और मम्मी पापा कहते हैं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे को तो अच्छा कॉलेज चाहिए. द पेरेंट्स केम टू माय ऑफिस की जितिन चावले से बाहर भेज दो. सो 1 साल वेस्ट हो जाए, मतलब होगा उसका भी. सो आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू. तुम्हारे 96 आए, 94 आए, 92, आई डोंट बॉदर. CUT अच्छा स्कोर आएगा तो अच्छा एडमिट मिलेगा. CUT इज योर फर्स्ट थिंग गाइज. शेक अप योर माइंड एंड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर CUT. अपने आप कर सकते हैं. विच बुक्स टू यूज? अरिहंत पब्लिकेशन यूज कर लो. यू कैन टेक अप ओके अड्डा 24/7 है, उसमें ऑनलाइन कोर्स 800-1200 रुपीज़ का, 1400 का कुछ मिल जाएगा, हमेशा डिस्काउंट लगा रहता है. सो अड्डा 24/7 यूज कर लो. otherwise you could you know so self study. कोचिंग भी ले सकते हो भाई, है ना. कुछ फ्री वाला है तो वो डालो ना यहाँ पर. इसमें डाल दो यार, कमेंट में एक लिंक डाल दो जिससे इन्हें 7 days के एक्सेस मिल जाएगा. हमारा एक हमारे जानकार जो कोचिंग रन करते हैं उनका एक एक्सेस दे देते हैं आप सब लोगों को 7 days का. पीपल हु हैव स्टेड टिल द एंड, सो विल जस्ट गिव यू दैट एक्सेस. And YouTube videos bhi theek hai. Nice boy, you are absolutely right. Yeah. What's your real name, nice boy? Tell me your real name also. What is this noise boy? Yeah, what is this? Tell me your real name. Come on. And also, just connect with me. I think you have done psychology. Come and intern with me. I think you have been pretty active. Come and intern with us. Maybe help me handle social media, do research and so on. तो हमारे numbers पे WhatsApp करना. Vikram sir, me will get in touch with you. ये 80 बीट्स का क्वेश्चन आंसर करना विक्रम. फार्मेसी वी हैव टू गिव नीट और CUT. सर नीट नहीं चाहिए. CUT कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करेंगी, अदरवाइज उनका अपना टेस्ट होगा. So we have mentioned the link for the registration of CUT mock. आप ये जाके अटेम्प्ट कर सकते हो. दिशा, कोर्सेज फॉर गवर्नमेंट टीचिंग BLED प्रोग्राम है, BA प्लस B.Ed का प्रोग्राम है, ये आप चेकआउट कर सकते हो. BLED दिशा दिल्ली यूनिवर्सिटी में है. देन यू हैव अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी में BA प्लस B.Ed बोलते हैं. BLED वैसे इस साल से काफी जगह और इंट्रोड्यूस होता है. Sara, what's your background like? Sara, just share your background and you can also share. So you guys, both of you can share. Okay, I'll give you HR का number डाल दो आप यहाँ पर. विनीता का number डाल दो यार विक्रम. So we'll give you our HR number. You can just WhatsApp her. Any people need internship, you can WhatsApp my HR. I hope she'll be troubled. WhatsApp her at night 11:30. Okay. She sleeps around that time. Nice boy. Who is he? He is looking for internships in psychology. Yeah, a lot of people come to me also, but कैसी चाहिए बता दो. Or you can go to Unique Psychological Services. वो अलग अलग एरियाज में करते हैं. You can go to Max है ना साइकोलॉजी के लिए, Max. So चलो मैं तुम्हें एक साइकोलॉजी के बंदे से मिलाता हूँ. He's at my office only. He's sitting here. So he'll tell you internships कैसे करें. Oh, nice boy is my older brother. तुम दो भाई, मतलब I'm sure you're खुरापाती brothers and you keep on
अपटर्निंग द हाउस, तुम्हारे घर में मतलब लड़ाइयाँ ये सब तुम दोनों की आपस में खूब होती होंगी मुझे लगता है. आई होप यू आर टेकिंग आउट ब्लड फ्रॉम ईच अदर एवरी डे. इफ यू टेक आउट ब्लड योर रिलेशनशिप विल बी सॉलिड. नो जस्टिक आई डोंट हैव एनी, मतलब मेरे यहाँ नहीं है बिकॉज आई रन अ करियर काउंसलिंग फॉर मैन. बट यू कैन चेक आउट. सो आई डोंट हैव एन इंटर्नशिप रिलेटेड टू स्टैट्स. नहीं तो जस्टिक तुम एक स्टडी करके रिसर्च कर सकते हो. Lofi CA foundation paper या basic accounts and all, just check on ICAI.org. You'll get it. Sarah, I'll need to. Sarah, you're from which school? Just tell us. विक्रम CTET का क्वेश्चन दिशा वर्मा. दिशा तो आप टीचर, मतलब दिशा कहीं टीच करने वाली है इमीडिएटली. कल से मुझे लग रहा है दिशा विल बी स्टैंडिंग इन अ स्कूल एंड टीचिंग. लास्ट टाइम क्यों साइकोलॉजी के लिए आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ वेरी स्मार्ट गाय, मच बेटर लुकिंग देन मी. ऑफ कोर्स ही इज मोर ओल्डर. कम, let me introduce you to an old guy we have with us. Introduce yourself. Hi everyone, my name is Tahir. I work as the senior psychologist for Jitin Chala Center here, and I am professionally a IO psychologist and industrial psychologist, and I am my therapy counseling services too. Yeah. So someone has questions. So please, psychology career. So whenever someone asks me, last and curious, whenever someone asks me what do you mean, like where should I go with my psychology career, I just tell them take up any industry and just add psychologist to it, and there is a job for you. So take up industrial psychology, clinical counseling, health, sports, child, school, education, career. Add psychologist to anything, and there is a job for it. So the job field is very vast, so there's no limit to anything, and you can just go in any field. Just check out which one you are most interested in. That's one thing. You share about your journey. Yeah, sure. So my brother is pursuing bachelor's in psychology. He's looking for internships. We If he wants to do clinical or counseling, we do have a tie up with Fortis Escorts. So we have a tie up with Happiness Studio. So we have some tie-ups, and we he can come here as well. We have internship here too at the development center, so he can come here as well. No issues. So over the years, what I've done is that I initially started with clinical psychology, and I started in my first semester of bachelor's. I went to a lot of hospitals. I worked at Imhans, I worked at Fortis, I worked at uh, Shifa, I worked at uh, yeah. So I worked in all these hospitals, and I worked under individual clinical psychologists also, and some counselors as well. So that was pretty amazing. I saw a lot of amazing cases of very profound schizophrenia, very profound OCD, bipolar, borderline depression, very profound, like you won't imagine in your wildest dreams. So that was a pretty great time, those 3 years. Then I'm in the COVID times, there was this company, and they approached me because it was overnight work from home, and it was very difficult for them to manage their workforce. So what they did was they approached me, and I worked with them for 2 years. Then I worked for another company as an industrial psychologist. Then I worked with Clarks. I worked with Kamalya Group. I worked with Indus Intex, which was textile, which was in turn working with brands like Zara and Lacoste and Marco Polo. So that was yeah. And now then I came here to Delhi. He has interned at 2 NGOs. That's great. Working with some NGOs gives you a lot of insight. Usually, working with children helps a lot. If you're going in psychology with poor people, or marginalized people, or disabled people, that is something that I think every psychologist should go through, especially who is going for clinical counseling. But anyways, it helps in any field. Psychology from India and abroad, which is better for girls? See, there's no. It's very subjective what you're looking for, and if you're see, because psychology is a subject which is very culture oriented. So you need to know the culture of that particular area where you're going to practice. So for example, if you are a clinical psychologist in India, and you're a clinical psychologist in USA, there is a lot of difference in culture and how you're going to approach your client. Like here, if someone is bisexual or is gay, so an approach here in India is very different from where in US. But because you have to counsel them, you have to give therapy. So how do I approach this person? It's very different. And for example, someone has gone through trauma,
Now there is kinds of traumas which vary from culture to culture. I have gone through a lot of trauma. Yeah. Every day my team gives me trauma. So that is one kind of trauma that you have in India, where your team gives you trauma. So that is, you have different kinds of possibilities. So I always tell people, even if you're going to abroad and in the end want to come back to India, work in India a lot actually, because the socio-economic and geographical and that hierarchy in India, that's something amazing. So learning about that culture will actually broaden your perspective a lot, if you want to put it like that. Yeah, so any other questions for psychology particularly? I don't think so, sir. No. Yeah, that's been about it. If you have any questions, you can contact me anytime. Thank you. Great, guys. So, abroad, which country is better? So, I would prefer UK, Australia. So, yeah, I suggest you should go back and research through all this. Check out my YouTube channel. I put a lot of videos which are, which can really be helpful for you. And also, try to do a lot of practical work. My suggestion to students always is that do some practical work to understand where your preferences lie. मैंने लोगों की देखा देखी, आई जस्ट फॉलोड पीपल, आई डिड साइंसेस. सो आफ्टर 12 भाई मैं साइंस में अच्छा था, इंडियन एनवायरनमेंट यू नो हाउ इट इज, एंड आई वाज गुड एट मैथ्स, गुड एट पढ़ाई, शरीफ अच्छा सा बच्चा. So I went in physics honors, and after second year I didn't want to do physics, shifted to management. Then I worked with companies. Suppose I want to earn money and all that, but even after earning money, like within 1 year, I was at a multinational company doing very well, staying in 5 stars, traveling crazily, luxury traveling, I would say. Like, I didn't like all that after 3 years. I said, I want to make a difference. I want to help people. I want to do something else. And I want to read. I want to write because I was good at that. I was a school topper, galti se. And then I started with career counseling, and God was kind. Within first year I got my, well, in fact first 4 months I got my first series of articles by Hindustan Times. Yeah, God bless them. Then I started writing for various newspapers. I got my first TV show within 1 year 2 months, DPS Society. Mr. Hussain was there at DPS Mathura Road, he helped me. Yeah. So, and then a lot of people, and there weren't too many people. अच्छा, कई लोगों ने बोला कि करियर काउंसलिंग कोई नहीं आएगा, कोई नहीं चलेगा. टुडे आई एम chock a block with counseling cases. I have a team of 34 people who work with me. We work not only in India, but in Dubai, Oman, Kuwait, Qatar, Africa, some countries. We are working with the Nepal-based schools. We run career center for some schools. I never imagined. Yeah. So उस समय पता नहीं होता, कुछ नया जो करना होता है वो लोगों को समझ में नहीं आता. नाइस बॉय ऐसे शुरू में लगता है यार, बाद में देखो अल्टीमेटली तुम्हें चाहिए कि कुछ मेरा पैशन मिल जाए जिसमें मैं लगा रहा हूँ. या बाकी सब अपने आप आएगा. ऑफ कोर्स एक सर्टेन लेवल ऑफ मनी चाहिए होता है, मतलब ठीक है 4-5 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीने का चाहिए तुम्हें. नाइस बॉय तुम्हारे हिसाब से बता रहा हूँ. सो ठीक है, ट्रैवलिंग चाहिए होता है, कहीं जा रहे हो अच्छी जगह रहोगे, अच्छा खाओगे पियोगे. सो ऑल दैट थिंग यू नीड, आई एग्री विद दैट. लेकिन एक बार मजा आ जाएगा ना कि हाँ ये एरिया, मतलब आई रियली वांट टू वर्क इन दैट. रोज सवेरे उठ के मन करता है, मतलब मेरा रोज सवेरे उठ के मन करता है मैं कहीं जाके वर्कशॉप करूँ. मेरा मन करता है मैं जाके स्टूडेंट्स, लाइक ऑफिस में काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, पेरेंट्स से बात करूँ. आई हैव डन रोटरी क्लब, आई हैव डन लाइक क्रेजी, महेश्वरी समाज, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, लायंस क्लब, कहीं भी जाके वर्कशॉप करिए. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड यू आर अमेजिंग पीपल. तुम लोग अभी तक बैठे हो, जबकि मैं आई एम जस्ट गिविंग यू लॉट ऑफ ऐसी स्टफ. इट इज़ नॉट रियली यूनिवर्सिटी रिलेटेड. सो I really feel that you should research and analyze things, and check out my YouTube channel. It will help you. Also, my Instagram is what is my Instagram, Ribu? Just can you write it down? I forgot. Oh God. jitinchawla.careerguru. Nice boy. Age of life of simplicity चाहिए तुम्हें. Nice boy, I can put you into an ashram. Okay. jitinchawla.careerguru is my Instagram. IG. सो डू लाइक वी डू लॉट ऑफ लाइव्स. मैं एकदम से लाइव स्टार्ट करने वाला हूँ, और जब एडमिशन का टाइम होता है मैं बहुत लाइव्स करता हूँ. मतलब आई कीप ऑन पुलिंग डिफरेंट पीपल एंड आई डू लॉट ऑफ लाइव्स. दिशा BLED है यार, DU में BSc B.Ed नहीं है. वो सबसे अच्छा अजीम प्रेम जी में. बैंगलोर चले जाओ यार,
पेरेंट्स को कहो कि मेरे को नहीं रहना दिल्ली में, बैंगलोर जाऊंगा मैं। बैंगलोर जाओ, इंडिपेंडेंटली रहो, खुद कमाओ, खुद खाओ, मजा आएगा। ओके, so that's how it is. So wish you all the best, guys. You are amazing. Do watch out our YouTube channel, my Instagram also. Instagram में भी रोज कंटेंट डालते हैं। अनुष्का मेरे को हेल्प करती है, मेरे साथ ही है। एंड LinkedIn में भी you can connect with us. LinkedIn also we keep on posting content. जैसे अगर बाहर से करोगे तो ना मैथ्स स्टैट्स के साथ तुम कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, म्यूजिक, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट वो कर सकते हो। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न शिकागो चेक करो, नॉर्थ वेस्टर्न शिकागो 4300 कोर्सेज। सबसे पॉपुलर कोर्स पता है क्या है? यू विल बी शॉक्ड, लव। 800 स्टूडेंट डूइंग दैट वन कोर्स। या दैट्स हाउ इट इज। अब CIC में नाइस बॉय DO ऑनेस्टली थोड़ा सुस्त तो है वो सेंटर, लेकिन आई होप उन्होंने शेप अप कर लिया है। तुम अच्छी इंटर्नशिप करोगे, अपने आप अच्छा प्लेस मिल जाएगा। खुद अपने आप हेल्प करना चाहिए यार। सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें होती है जिन्हें छतों तक जाना होता है। अगर चुना है आसमां को तो रास्ता खुद बनाना होता है। आदाब। चलो बाय बाय, आई एम गोइंग नाउ।